Hello students, welcome back to my channel. Hope you people are doing well. Now in this video I am going to start with the topic the aristocracy and the new middle class. अब ये जो topic है, this is a part of the topic the making of nationalism in Europe. In the previous video I had already told you people कि इस topic को कई सारे सब topics में divide किया गया है क्योंकि nationalism, emergence of nationalism in Europe was not all of a sudden. वो एक gradual process था. तो किन किन वजह से what are the things that led to the rise of nationalism or the rise of nation states in Europe, उन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए क्या किया गया है, अलग अलग हिस्सों में सब टॉपिक्स में इस पूरे मैटर को डिवाइड किया गया है. Now in this topic we will study about who were the people जिन्होंने सबसे पहले इस आइडिया को कंसीव किया, एक्सेप्ट किया और प्रमोट किया. हाउ के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो टॉपिक है वो डील करता है अबाउट द पीपल, हु वर द पीपल who promoted or who were the ones who were greatly influenced by the idea of nation states. Now so let us start. तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि at that time when यूरोप में मल्टी डायनेस्टिक रूल्स हुआ करते थे, देयर वर मोनार्क्स एंड ऑल, उस समय पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन क्या था, हु वर द पीपल लिविंग इन द कॉन्टिनेंट, कौन इन्फ्लुएंशियल थे, और फिर आगे चल के उसी पॉपुलेशन में वो कौन से लोग थे जिन्होंने इस आइडिया को एक्सेप्ट किया. एंड डेफिनेटली कुछ ऐसे लोग होंगे, देयर मस्ट बी अ ग्रुप जो इस आइडिया को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते होंगे. सो एट दैट टाइम जो डोमिनेंट क्लास था ड्यूरिंग the era when there were monarchs and aristocrats ruling in the continent of Europe, the dominant class was the landed aristocracy. Means aristocracy का मतलब हो गया the ruling class people, and they were the ones who owned plenty of land. इसीलिए ये term use किया गया है, a landed aristocracy. The members of this class were united by a common way of life that cut across regional divisions. Now, since Europe is a continent और उसमें कई सारे countries थे, like you had Germany, France, Switzerland, तो ये aristocracy जो थी, the aristocrats जो थे, वो सारे territories में present थे. लेकिन उन सभी territories, whether वो हैब्सबर्ग एम्पायर का टेरिटरी हो, चाहे रोमन एम्पायर का हो, चाहे बर्बन डायनेस्टी का हो, ऑल दीज एरिस्टोक्रेट्स, उन सारे एरिस्टोक्रेट्स में कुछ चीज़ें कॉमन थी. एंड वो सारे कुछ 4 लगभग पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर लिस्ट किए हुए हैं. द कॉमन पॉइंट्स वर, फर्स्ट पॉइंट, दे वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ. कॉमन वे ऑफ लाइफ मतलब उनका लाइफ स्टाइल एक जैसा था. दे वर रिच, दे हैड अ lavish lifestyle, they lived in splendid palaces and all, whether they lived in the Bourbon dynasty region or they lived in the Habsburg dynasty wale region or in any other kingdom. Second common thing was that they owned estates in the countryside and also town houses. Now estates refers to land, huge plots of land are also referred to as estates. तो सेकेंड थिंग वॉज कि उनके पास काफ़ी सारा ओनरशिप होता था लैंड का, एंड दिस लैंड वॉज प्रेजेंट नॉट ओनली इन द कंट्री साइड मतलब जो विलेज साइड थोड़ा हो गया, जो आउटस्कर्ट्स हो गया टाउन का या सिटी का. उस समय तो खैर सिटी वाला कंसेप्ट नहीं था, टाउन्स थे. तो जो आउटस्कर्ट्स थे, ओवर देयर ऑल्सो दे ओन्ड प्लेंटी ऑफ लैंड एंड दे ऑल्सो ओन्ड प्रॉपर्टी, दे ऑल्सो ओन्ड हाउसेज इन द टाउन्स. Now, the third common thing was the language. They spoke French for purposes of diplomacy and in high society. Whenever these aristocrats used to come together, जब अलग अलग डायनेस्टी या एम्पायर्स के एरिस्टोक्रेट्स का भी उनका गेट टुगेदर होता होगा, या फिर किसी वजह से किसी पॉलिटिकल इशू को डिस्कस करने के लिए या कुछ नेगोशिएशन के लिए जब वो आपस में मिलते थे, तो उनका लैंग्वेज क्या होता था, विच लैंग्वेज दे स्पोक इन अमंग्स देमसेल्फ, इट वाज French language. Then the fourth common thing, their families were often connected by ties of marriage. Now
it was obvious कि a person belonging to one dynasty would definitely like to marry somebody from another aristocrat family. तो अक्सर क्या होता था, these dynasties, these empires, somebody or the other वहाँ पर आपस में ही क्या marriages हुआ करते थे. So there was some ties of जो आपस में कुछ connections हुआ करते थे in dynasties का या in empires का, that was because of the marriage that used to take place amongst themselves. Then this powerful aristocracy was however numerically a small group. तो dominant group तो हमें पता चल गया कि aristocrats थे at that time when there was no nationalism, there was no nation state in Europe. Now in terms of number क्या था, but in terms of number these aristocrats were few. And who were more in number? The majority population was that of the peasantry. Peasantry हो गया तुम आपका the lower class people, the farmers, the workers, the serfs. To the west, the bulk of the land was farmed by tenants and small owners. तो western side of continent में क्या trend था, वहाँ का जो land था that was usually cultivated by tenants like renters, okay, and small owners. There were small owners, small families or individuals who owned small patches of land. But on the eastern and central side of the continent, the pattern of land holding was characterized by vast estates which were cultivated by serfs. Serfs, you can think you can refer to them as laborers. वहाँ landlords हुआ करते थे, वहाँ rent system या small ownership नहीं था. In the eastern and the central part of Europe, वहाँ पे serfdom चलता था. Like some kind, these laborers were like bonded laborers की तरह उन्हें काम करना पड़ता था. तो इससे क्या हमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या पता चल रहा है कि जो ईस्टर्न और सेंट्रल साइड है यूरोप का, वो थोड़ा और ज़्यादा पिछड़ा था. ओवर देयर द कंजर्वेटिव सोसाइटी वॉज इवन वेरी रिजिड इन दिस एरिया एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न पार्ट. Now, in the western and the parts of Central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and the emergence of commercial classes whose existence was based on production for the market. Now, with passage of time, what happened? We have already said in junior classes that there was rise of industrialization, the emergence of industrialization. तो gradually industrialization जो इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ, it now spread to other parts of the European continent. And उसकी वजह से क्या हुआ? What was the consequence? There was growth of industries, there was growth of industrial production. Now अब industries में there was need of workers, plenty of workers were required to work in those factories. तो अब वो कौन से लोग थे जो अब इस फैक्ट्रीज में काम करेंगे? वही सारे सर्व्स या टेनेंट्स या स्मॉल फार्मर्स. अब वो कल्टिवेशन वाला काम छोड़ के नाउ दे स्टार्टेड शिफ्टिंग टुवर्ड्स द टाउन्स एंड द सिटीज एंड दे स्टार्टेड गेटिंग जॉब्स इन दीज इंडस्ट्रियल एरियाज. एंड दिस लेड टू द ग्रोथ ऑफ और इमर्जेंस ऑफ अ कमर्शियल क्लास. ना अब ये कमर्शियल क्लास के एग्जिस्टेंस का आधार क्या था? वाई वर दे एबल टू कम अप एज अ सेपरेट ग्रुप? इट वॉज बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन दैट occurred in the industrial areas. These people were now employed in these industrial areas and अब इनका livelihood, lifestyle सब कुछ depend करने लगा उस production के ऊपर. That was because of the industrialization. Now, industrialization started in England in the second half of the 18th century, but it spread to the other parts of Europe, like in countries of France, like in countries like France and Germany during the 19th century. तो मतलब कुछ समय के बाद वहाँ पे इन्फ्लुएंस पहुँचा. बट जैसे भी इन्फ्लुएंस जब भी पहुँचा, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ
देयर केम न्यू सोशल ग्रुप्स. नाउ न्यू सोशल ग्रुप्स, उसी पॉपुलेशन में अब एक नया ग्रुप बन के आया विच वॉज नोन एज द वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड द मिडिल क्लासेस. और ये वर्किंग क्लास पॉपुलेशन और ये जो मिडिल क्लास है वो किन लोगों से बना हुआ था? हु वर द वंस हु कंप्राइज्ड ऑफ दीज टू क्लासेस? दे वर द इंडस्ट्रियलिस्ट्स, द बिजनेसमैन, द ट्रेड्समैन, द professionals, the workers. In Central and Eastern Europe, these groups were smaller in number till late 19th century. तो मे बी बिकॉज समय लगता है चेंज आने में, तो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में क्या हुआ, दिस ग्रुप वो ज़्यादा अभी इट वॉजन मच इन नंबर, दे वर स्मॉल इन नंबर टिल लेट 19th century. It was among the educated liberal middle classes that ideas of national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity. Now, some people जो पहले lower classes के हुआ करते थे, as they got an opportunity to work in these industries, gradually उनका थोड़ा income level बढ़ा, थोड़ा financial stability उन्हें मिला, and then उसकी वजह से maybe they were able to get themselves education. So what happened, अब इन्हीं working class population, इन्हीं middle class population के वैसे लोग जो अब educated हो चुके थे, जो अब liberal हो चुके थे, their mindset had become liberal, although they were still living under the rule of any monarch or any aristocrat, लेकिन mentality wise, vision wise, they had become liberal. So they were the ones, these were the first few people who were able to conceive this idea and accept this idea, and then further promote this idea of national unity or nationalism, or you can say of nation states. And these were the ones, यही वो लोग थे who then stood up, or they raised their voices for the abolition of aristocratic privileges in the European continent. So now, because of their education, because of their changing mindset, what is happening now, they were not only able to accept this concept of nationalism or national unity and the idea of nation states, they were now, they became bold enough to raise their voices against the aristocratic families, the aristocratic rulers who had been ruling them since centuries. So this is all about who were the people who came up with the idea of nationalism, and they were the ones who promoted and made this idea popular within the continent. So that's all in this topic. Thank you, students.